Hey guys, myself Data and welcome back to my channel. So in this video, I'm going to talk about the Amazon Mechanical Turk, that is also known as Mturk. Whether Indians are eligible to work in this platform or not. So starting with the video, बहुत जन को पता होगा what is Amazon Mechanical Turk. In the other hand, बहुत जन को नहीं भी पता हो सकता है. So for that, I'm just giving you a short summary of it. जैसे बहुत सारे फ्रीलांसिंग साइट्स है fiverr.com, rev.com. Amazon Mechanical Turk is also kind of a freelancing site जहाँ पे छोटी बड़ी कंपनियाँ आके अपना जो फ्रीलांसिंग काम है वहाँ पे पोस्ट करता है और जो वर्कर्स है जो साइन इन करता है उधर दे यूज्ड टू डू द वर्क एंड दे यूज्ड टू गेट मनी, उसको पैसा मिलता है वो काम करने के लिए. दैट इज़ Amazon Mechanical Turk. The main thing is that whether Indians can apply for these posts or not. A few days ago, कुछ दिन पहले मैंने अप्लाई किया था Amazon Mechanical Turk पे. So I received this mail. In this mail, it is written my application is not accepted, and there are certain criteria that is not fulfilling. And in the last part of the mail, they guys have also mentioned that अगर जो उस लोग का criteria है in the future if changes, they will contact. So guys, presently the Amazon Mturk is not accepting Indians. But if you wish to apply for this post, you can surely apply. क्योंकि ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है बहुत लंबा टाइम ले लेता है. तो यू गाइस कैन स्टिल अप्लाई फॉर दिस पोस्ट इन फ्यूचर इफ़ अगर कुछ होता है तो यू गाइस विल डेफिनेटली गेट ए मेल फ्रॉम देम. एंड दिस इज़ ए काइंड ऑफ जॉब and it's a kind of freelancing job, and the best part is that you are working with Amazon. In the future if the criteria changes, then you guys can obviously work. So guys, you can easily register in that portal. So registration के लिए बहुत सारा videos है YouTube में वहाँ पे मिल जाएगा. You can just check off those videos. Hope this video was little doubt clearing, or if you have any doubts you can ask me in the comment section. Till then, stay blessed.